Dear student, today I discuss the topic the male reproductive system. It is the third chapter of the unit 6 of the class 12. Unit 6, chapter 3rd. As we know that male and female, in case of women, is sexually separate, and in women sexual reproduction takes place by the fusion of gamete. Woman is sexually separated and reproduction takes place by fusion of gamete. Gamete as sperm and ova. The male gamete is called sperm, whereas the female gamete is called ova. These two gametes are haploid that means half number of chromosomes in it, as fusion of these takes place zygote for zygote undergoes mitosis to form multicellular structure called embryo. Embryo later develop into individual. Women कैसा है? Sexually separated है. Male and female, both sexes are separated, and by the fusion of gamete, reproduction takes place in it. These two gametes are haploid. As the fusion of these takes place, zygote form. Zygote undergoes mitosis, which is equal to क्लीवेज। माइटोसिस यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि डिवीजन होगा माइटोसिस की तरह,
but the cell divide is completely not different from the mitosis. Here the cleavage how slightly differ from the mitosis. In cleavage process, cell rapidly undergoes successive division, but growth of cell, that means volume of cell, that cannot increase. इस तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि एक सेल इतना बड़ा है वॉल्यूम में और डिवाइड करें तो क्या होगा, साइज में छोटा होगा, फिर डिवाइड करेगा तो ये सेल डिवाइड करके और साइज में छोटा हो जाएगा। पर ये डिवीजन क्या है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, बोथ दैट कंटिन्यू but the growth phase, each successive division does not take place. Thus number of cell increases but the volume per cell decreases. It is called cleavage process, whereas in mitosis each daughter cell before entering in the next cell division firstly grow in size and then again divide. इसलिए जाइगोट जब डिवाइड करेगा तो प्रोसेस है माइटोसिस, पर उसके लिए सबसे अच्छा टर्म यूज करना हो तो क्लीवेज, यहाँ पर क्लीवेज टर्म लिखना ज्यादा अच्छा है। टू फॉर्म मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्ब्रायो डेवलप्ड इनटू इंडिविजुअल, यानी न्यू यंग वन में डेवलप हो जाएगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बोथ सेक्सेस, दोनों ही सेक्सेस के रिप्रोडक्टिव पार्ट को पहले स्टडी करेंगे। हाउ द गैमेट आर प्रोड्यूस, दैट मीन्स इन स्पर्म हाउ डेवलप्ड फ्रॉम द गोनैड सेल, यानी रिप्रोडक्टिव सेल से किस तरह से, गोनैड सेल से किस तरह से हैप्लॉइड सेल यानी स्पर्म डेवलप होता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, whereas the development of ova is called oogenesis in case of the female, and both together called gametogenesis. The process of formation of gamete is called gametogenesis, but you can also say spermatogenesis together with oogenesis is called gametogenesis. Now we start male reproductive system. Male reproductive system consisted of or made up of following parts as the first testis, second vasa efferentia, epididymis,
vast difference five is a ejaculatory duct six urethra seven seminal vesicle eight prostate gland nine bulbo urethral gland and 10 penis. These are some part of the reproductive system. About these, the first is called primary sex organ. इसको याद कर लेना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि पूछ देगा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द वुमेन इज इन केस मेल द टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पर लिख लेना है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। Why we call the primary sex organ of the testis? It is the part of the reproductive system that involved in the formation of male gamete, that is sperm, so we called primary sex organ of the woman. Whereas vasa efferentia, epididymis, vas deferens, ejaculatory duct, urethra, seminal urethra and seminal vesicle, seminiferous tubule एक छूट रहा है, एक और ऐड कर लेना है बीच में, तो इसको कर देते हैं बीच में यहाँ पर 3 डाल देते हैं, इसको 4 कर लेना है। सबको नंबरिंग में 4 5 6 7 8 9 10, that means 11 part in the male reproductive system in general। तो 2 से लेकर के 7 तक को एक साथ हम लोग एसेसरी डक्ट के नाम से जानते हैं। एसेसरी डक्ट याद रखना है। और ये लास्ट इधर से 3 जो दिख रहा है 1 2 3 4 3 11 से ऊपर 10 तक, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एसेसरी ग्लैंड कहेंगे। Accessory gland. Why called gland? These are secretory in nature. These are secretory. That means it releases some fluid that take part in constitution of the semen, and so we called accessory gland. Whereas the last one, that is penis, is the male copulatory organ. इसको क्या लिखेंगे? Male copulatory organ. मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। इस तरीके से डिफरेंट पार्ट को आपने देखा। अब ग्रामेटिकली इस डिफरेंट पार्ट को हम लोग देखेंगे।
चैप्टर फिनिश होने के बाद इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आने वाला है या कितना प्रीवियस लास्ट ईयर में कुछ नीट पे कैसा कैसा क्वेश्चन आया है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। द एंड ऑफ द चैप्टर। अब हम डायग्राम बना रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये अभी जो बना रहे हैं दैट इज द सेमी फेरस ट्यूब्यूल एंड द आउटर मोस्ट स्किन फोल्डिंग इज कॉल्ड स्क्रोटम। दैट मीन्स स्क्रोटम is a special skin folding that located in the pelvic region outside the abdomen. Scrotum. And the testes that densely packed by the tunica albuginea. इसके ऊपर हम ऐसे कुछ दिखा रहे हैं, ये टूनिका एल्बुजिनिया डेंस फोल्ड कनेक्टिव टिश्यू है। टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच वाले रीजन में जो टिश्यू है उसको टूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। इट इज टूनिका एल्बुजिनिया। ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेमीफेरस ट्यूब्यूल। Seminiferous tubule, and each testis that made up of 250 to 300 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, यानी ये छोटे छोटे चेंबर में बटा हुआ है। इसको हम यहाँ पे इस लाइन से ऐसे करके दिखा दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर चेंबर। ये कितना है 250 टू 300। इस चैम्बर को हम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं टेस्टिकुलर चैम्बर। टेस्टिकुलर चैम्बर and each testicular chamber has 1 to 3 semiferous tubule। हर टेस्टिकुलर चैम्बर में 1 से 3 सेमीफेरस ट्यूब्यूल होगा। अब यह टेस्टिकुलर चैम्बर से के हर एक सेमीफेरस ट्यूब्यूल से फाइन थ्रेडस स्ट्रक्चर निकल रहा है जो एक कॉमन चैम्बर बना रहा है। मान लो यहाँ पर एक इधर से और इधर का एक 2, यहाँ से एक ही निकला, इधर से 3, इधर से 2, यहाँ से 1। अब यह जो नेट लाइक स्ट्रक्चर जो बनाया है इसी को रेट टेस्टिस कहते हैं। इसको चाहो तो रेट टेस्टिस लिखा जा सकता है यहाँ। रेट टेस्टिस। अब बहुत सारा रेट टेस्टिस जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है उसका कॉमन डक्ट आपस में मिलकर के एक ब्रॉड डक्ट बनाए। चलो इस सब को एक जगह हम यहाँ पर मिला रहे हैं अलग अलग रीजन में। अब ये क्या बनाया है कॉमन डक्ट। इस कॉमन डक्ट को दिखाने के लिए हम थोड़ा ब्रॉड कर दिए, थोड़ा वाइड बना दिए। इसी को भाषा इफ्रेंसिया। अब ये भाषा इफ्रेंसिया
टेस्टिस को लीव करते हुए छोड़ते हुए बाहर निकला और ये हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाया आउटसाइड। टेस्टिस हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एपिडाइडेमिस। एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो वेयर द स्पर्म दैट स्टोर in the region of epididymis, the sperm is stored from the cauda। cauda मतलब यहाँ पर नीचे वाले रीजन पे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोअर पार्ट ऑफ द epididymis from the where the vas difference originate is called caput। सॉरी कॉर्डा, ऊपर वाले को कैपूट, इसको नीचे वाले को कॉर्डा। कॉर्डा का मतलब नहीं होता है टेल। अब यहां से हम निकाले एक डक्ट और ये डक्ट नीचे से फिर क्या किया, एब्डोमेन के रीजन में चला गया ऊपर और टर्न बेंड डाउन। एब्डोमेन में जाने के बाद फिर वह थोड़ा सा नीचे की तरफ आया और यह एक सेमाइनल वेसाइकल से ज्वाइन कर गया। सेमाइनल वेसाइकल क्या है, ग्लैंड है, तो ये रहा ग्लैंड, इसको दिखा दिया इसे। अब ये सेमाइनल वेसाइकल से जैसे ही ज्वाइन किया था, अब इस डक्ट का नाम हो गया इजैकुलेटरी डक्ट। तो देयर आर टू टेस्टिस फ्रॉम one located left side and other right side। इसका नाम हो गया epididymis। epididymis और इस डक्ट का नाम वासा, वास डिफरेंस। तो क्या कहेंगे, भास डिफरेंस। और इसको क्या कहेंगे, सेमाइनल वेसाइकल। अब इसका नाम क्या हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट। The two ejaculatory ducts, one from the left and other from the right, join to form a common duct। ये दूसरा सेमिफेरस ट्यूब्यूल, ये किधर से, तो लेफ्ट वाले की तरफ से, और ये दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाया जिसको क्या कह रहा है, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा इज अ कॉमन डक्ट फॉर डिस्चार्ज ऑफ द यूरिन एंड एज वेल एज द सीमेन, व्हिच passes centrally to the male copulatory organ, that is called penis। And the skin of the penis is called foreskin, and the swelling part of the tip of the penis is called glans। These are some points related to the male reproductive system। It is the glans, foreskin, and the entire part is called penis। It is called urethra, and the junction of the ejaculatory duct where located single
pear-shaped gland called prostate gland. These are some structure related to the male reproductive system. And just anterior to the prostate gland is a one pair gland located, is called bulbourethral gland. It is bulbourethral gland. तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर देख लिए मेल रिप्रोडक्टिव। इसको ड्रॉ करना बहुत आसान है, किताबी डायग्राम को बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स लगेगा, किंतु 2 से 3 बार इसको ड्रॉ करें तो आसानी से स्ट्रक्चर को ड्रॉ भी कर लेंगे। और डिफरेंट पार्ट को जब इसको ड्रॉ करेंगे तो याद भी हो जाएगा कि द पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड हियर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे डालेगा, इफ द हार्ट डिफरेंस दैट गेट ब्लॉक्ड देन द सीमेन स्टोर्ड वेयर, देन इट मींस सीमेन स्टोर्ड इन एपिडाइडिमिस। कभी क्वेश्चन यहाँ से उठा लेगा कि अगर ये ब्लॉक हो जाए तो कहाँ नहीं आ पाएगा, तो जवाब होगा एपिडाइडिमिस। तो डायग्राम याद रहे तो डिफरेंट पार्ट भी समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा पार्ट है, और उससे रिलेटेड फंक्शन अगर बात किया जाता है तो वो भी दिमाग में। क्वेश्चन है, इन द सीमेन द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द व्हिच ग्लैंड। तो आपको याद रहेगा ये वाला पार्ट इज सेमाइनल वेसिकल दैट रिलीजेस large amount of the fluid that are the major constituent of the semen। तो ये डायग्राम याद रहे तब तो आपको याद रहेगा कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेन किसका पार्ट है, तो सेमाइनल वेसिकल का है। Which part of the male reproductive system that lubricate the urethra, यानी स्मूथ चिकना बनाने के लिए कौन सा ग्लैंड है जो स्मूथ बनाता है पाथ को, तो दैट इज कॉल्ड bulbourethral gland। तो ये सारी बातें इससे रिलेटेड है, और एक एक अभी हम लोग इसका डिसेक्शन करेंगे, द इंटायर पार्ट इसका डिसेक्शन करेंगे, तब आएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, किस सेल से लाइन है उसकी बात करेंगे, कैसे गैमेट बनता है उसकी बात करेंगे। ये सारा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एरिया। अब इसमें आप अभी मेरा उधर राइट दिखा रहे हैं, लेफ्ट इसी तरह अगर दिखा दे तो इंटायर, तो पूरा बनाना जरूरी नहीं है, हाफ पार्ट को ही लेवलिंग करके डायग्राम को समझा जा सकता है। तो यहाँ तक क्लियर है। हम लोग चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज टेस्टिस, यानी टेस्टिस से हम लोग चालू करने वाले हैं। Its number are 2 and located inside a special skin folding that is in scrotum. Scrotum located in pelvic कहते हैं कमर वाले रीजन को, तो pelvic रीजन, पेक्टोरल कंधे वाले को, तो pelvic रीजन
outside abdomen. स्क्रोटम दैट प्ले इम्पोर्टेंट, एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है जो बताने जा रहे हैं। कई बार आप प्रीवियस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्रोटम while the testes in the mammals in generally located outside the body. Its answer is scrotum provides low temperature to the testes than that of the body temperature about 2.5 to 3 degrees Celsius, and it is essential for the formation of gamete. यानी स्पर्म बनने के लिए बॉडी टेम्परेचर जितना है 37 डिग्री सेल्सियस उससे कम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर राइज कर जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है 2.5 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस प्रोवाइड टेम्परेचर देन दैट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। इसको याद रखना जरूरी है। तो लिखिए दिस नंबर are 2 and located inside a special skin folding that is in scrotum. Scrotum located in pelvic region outside abdomen. It provides plays important role in spermatogenesis. The process of formation of male gamete that is sperm is called spermatogenesis. तो किस में रोल करता है? Spermatogenesis में by providing क्या चीज? The low testicular temperature than that of body temperature about 2 से 2.5, ये भी लिख सकते हैं 2 to 2.5 और 3 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह समझ सकते हैं कि स्क्रोटम का रोल क्या है। Testis that comes in scrotum through a cavity called gubernaculum, and each testis remains get folded by densely packed by fibrous connective tissue called tunica albuginea. Each testis remain densely packed by fibrous connective tissue called tunica albuginea, जो पहले डायग्राम में मैंने दिखाया था। tunica albuginea से डेंस कनेक्टिव टिश्यू से घिरा हुआ है। Each testis, next point, is 4 to 5 centimeter long and 3 to 4 centimeter in diameter. It means testis packed with, highly packed with
seminiferous tubule it या testis या लिख सकते हो testis packed with seminiferous tubule whereas each testis has 250 to 300 compartment. कितना है 250 से 300 compartment called मान each compartment called testicular chamber. हर कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं टेस्टिकुलर चैम्बर. There is 1, 2, 3 seminiferous tubule in each testicular compartment. नेक्स्ट पॉइंट अलग से from each seminiferous tubule find tube arises that forming net-like structure is called क्या चीज the red testis. Seminiferous tubule internally lined by single layer of germinal epithelium. जो डायग्राम से क्लियर होगा. Each seminiferous tubule internally lined by single layer of germinal epithelium or reproductive cell or
इसी को गोनेड सेल भी कहते हैं। गोनेड सेल which involved in male gamete formation, इसमें मेल गैमेट बनाने में भाग लेता है, and a few tall pillar like cell, tall pillar like cell present called नर्व सेल्स और सर्टोलिक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्टोलिक, इसको दिमाग पर रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि सर्टोलिक सेल कहाँ मिलता है, मेल रिप्रोडक्टिव से यानी मेल में कि फीमेल में, तो इट फाउंड इन द मेल सर्टोलिक सेल। इट इज लॉन्ग पिलर, टॉल पिलर लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट द प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द गोनेड सेल, रिप्रोडक्टिव सेल और क्या कहते हैं टर्मिनल एपिथेलियम, एंड सो इट कॉल्ड नर्व सेल्स। इसको नर्व सेल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दो सेमिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस है, चलो हम पहले डायग्राम बना देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बोलते जाते हैं थोड़ा समझ में नहीं भी आए, इसलिए पहले यहाँ तक तो क्लियर हो जाएगा अभी डायग्राम से। तो हम ड्रॉ करने वाले हैं टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द टेस्टिस। अब जो डक्ट ऐसे चला था, देखो ध्यान से सेमिफेरस, इसको हम ऐसे कट कर दिए, तो हर एक डक्ट है, डक्ट का मतलब ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, तो उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसे बनेगा, ये रहा एक ट्यूब का, मान लो इतना मोटा वाला, इसको मैग्नीफाइड किए, ये दूसरा, और पहले ही हम ऐसे कर देते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू एंड द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो हो सकता है कि ये कुछ पार्ट ही तुमको यहाँ नजर आए, इधर तक कट चुका होगा और यहाँ पर एक और बना दिए इसे। चलो, तो हम 4 सेमिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिए, और ये 4 जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल जो है इंटरनली लाइंड था सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये भी क्वेश्चन है, एक चीज ध्यान रखना, ये कैसा है, कॉलमनर है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल गोनेड सेल है कि सिलिएटेड है, तो याद करके रखना क्यूबॉइडल है, क्यूब सेपरेट, और इसमें कुछ फ्यू टॉल पिलर लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से सारे ट्यूब्यूल में इस तरह का स्ट्रक्चर 1 या 2 बना सकते हो, या किसी में नहीं भी दिखा सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि वहां पर क्रॉस सेक्शन कटा तो टॉल पिलर लाइक सेल तुमको आइडेंटिफाई। मान लो कि हम इस बोर्ड पर छोटे छोटे गम से छोटा छोटा एक बॉल मतलब गेंद को चिपका दिए जहां का, और बाई चांस क्रॉस सेक्शन काटे, तो उस लाइन पर जो जितना बॉल आएगा वही ना क्रॉस सेक्शन तुमको दिखेगा उसका व्यू। और यहाँ पर अगर ऐसे कर दिया तो क्या तुमको मिलेगा क्या, तो नहीं मिलेगा। उसी तरह से सेमिफेरस ट्यूब्यूल में टॉल पिलर लाइक स्ट्रक्चर दिखा भी सकते हो, नहीं पर होता है सिंगल, कहीं कहीं कुछ टॉल पिलर लाइक स्ट्रक्चर सेल है जिसको हम लोग सर्टोलिक सेल कह रहे हैं, जिसको नर्व सेल्स कह रहे हैं, और ये वाला इसके चारों तरफ, क्योंकि हर जगह बोर्ड पर पूरी बोर्ड का सेक्शन तो हर जगह मिल जाएगा, इसको हम क्या कर रहे हैं ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है, दैट इज क्यूबॉइडल
gonad cell, epithelial that take part in the male gamete formation. इसमें भी हम उसी तरह, एक्चुअली टाइम टेकिंग है, तुम लोग को घर पर अपने स्लो मोशन में बैठ के बनाते रहना, इसमें भी बनेगा, सब पर बनेगा ऐसे। ये सेमीफेरस ट्यूब्यूल पर ये स्ट्रक्चर ऐसे करके इस पर सब में बनाना होगा। और आराम से बनाओगे, प्रैक्टिस करते हुए तो बन जाएगा। अच्छा होगा कि एक ही बार में जल्दी जल्दी हो जाए तो ऐसे नहीं होता है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बना ये हो गया गोनाड से, जर्मिनल एपिथेलियम। तो सेमीफेरस ट्यूब्यूल कितना लेयर से लाइन से है? सिंगल लेयर ऑफ, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर हो गया सेमीफेरस ट्यूब्यूल, और जो इंटरनली लाइन है इसी को जर्मिनल एपिथेलियम या गोनाड सेल या रिप्रोडक्टिव सेल। और इसमें टॉल पिलर लाइक सब, इसमें चाहो तो ऐसे करके न्यूक्लियस दिखा देना है। और यहाँ पर लंबा वाला जो टॉल पिलर लाइक है इसी को हम लोग सर्टोलिक सेल, और इसमें जो कुछ बीच में स्ट्रक्चर सेल है, ये खास पॉइंट है, इसको याद करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट इज द सेकेंड इंटरस्टिशियल सेल एंड इट इज endocrine in nature. Male sex hormone testosterone that released from it as the pituitary hormone, interstitial cell stimulating hormone that on it 11th में पढ़े होंगे, एक चैप्टर है इंडोक्राइन ग्लैंड, तो उसमें टेस्टिस भी इंडोक्राइन ग्लैंड है, तो वहां पर सिर्फ इस पार्ट को पढ़ना था। Interstitial cell that releases male sex hormone called androgen, especially testosterone. यही वह सेल है interstitial cell that are glandular, particularly कह सकते हो endocrine in nature। तो ये हो गया interstitial cell। और इसके बीच सबसे ऐसे करके जो जा रहा है, क्या जा रहा है? अगर ब्रांचिंग हम शो कर रहे हैं तो समझ जाओ कि ये ब्लड वेसल को बता रहा है। ये सब क्या है? ब्लड वेसल। इसको हम हिंट कर दे रहे हैं ब्लड वेसल, और इसको लिख दे रहे हैं इंटरस्टिशियल सेल। और ध्यान रखना यहीं पर एक क्वेश्चन है छुपा हुआ, जब सेकेंड मेडिकल में पूछता है, इसका दूसरा नाम क्या है? द लेडिक सेल्स। द लेडिक सेल्स फाउंड इन मेल और फीमेल। तो मेल, इसको याद करना, इसको पूरे में एक है सर्टोलिक सेल को याद कर जाना है, और दूसरा लीडिक सेल को याद कर जाना है। लीडिंग सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल को ही लीडिंग सेल्स कहते हैं। तो बस दो ठो तो यहां से क्वेश्चन बन रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो सेमीफेरस ट्यूब्यूल इज इंटरनली लाइंड बाय, तो कौन सा? सबको पता है भाई, वो रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, चलो यही है एक। तो हम क्या बताएं कि each semiferous tubule internally lined by a single layer of gonad cell that involved in the male gamete production, that is sperm, and a few pillar-like cells that also present, that is called sertolic cells or nut cells. अब बात करने वाले थे, हम बता रहे थे कि चलो बीच में ड्रॉ, यहाँ पर दो सेमीफेरस ट्यूब्यूल के बीच वाला जो स्पेस है उसमें कुछ स्कैटर्ड सेल है जो इंडोक्राइन सेल है, जिसका नाम इंटरस्टिशियल सेल और लीडिक सेल है। तो आप तो क्लियर हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं इजी वे से, देख करके लिखना है। कुछ आदमी समझता है कि रट लिया जाता है, नहीं, बायो में है, देखो और लिखो, डिस्क्रिप्टिव है, देख करके लिख सकते हो, आसानी से हो सकता है। तो लिखते हैं
inter seminiferous tubule has a space in which few, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा जहां तक few cells are scattered, called क्या चीज, interstitial cell और लीडिंग सेल। Which are endocrine in nature, that means it releases hormone, which are endocrine in nature. That releases male sex hormone called, इसको याद रखना है, एंड्रोजन। एंड्रोजन अब पार्टिकुलरली कौन सा, ऑल मेल सेक्स हार्मोन टुगेदर कॉल्ड एंड्रोजन है, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन। इसमें बढ़ाना चाहोगे किसके इन्फ्लुएंस में, अंडर पिट्यूटरी हार्मोन, इंटरस्टेशियल आईसी, इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो कौन हार्मोन रिलीज हुआ, मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टुगेदर विथ एफएसएच, follicular stimulating hormone, that are released from the pituitary anterior lobe, and together FSH and testosterone that act on the gonad cell and stimulate spermatogenesis। ये फंक्शन है, ये स्ट्रक्चर की बात हो रहा है। जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट, वहां पर इन दोनों को हम कोलैबोरेट कर देंगे, यानी ज्वाइन करेंगे और तब हार्मोन के एक्शन को बताएंगे, तभी तो स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इस तरीके से तुम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस समझ गए, और ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर को ध्यान से रखना है। और इंटरस्टिशियल यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दैट लाइन्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स and a few tall pillar like cells also protect, called Sertolic cell or nerve cell, that provide nourishment to the gonad cells for the spermatogenesis। ये हो गया टेस्टिस की बातें। रेड टेस्टिस तक पहुंच गए थे, अब हम वासा इफ्रेंसिया की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज द एसेसरी डक्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Accessory duct, पहला शुरू हो रहा है वासा इफ्रेंसिया।
many red testes open in a common duct inside testis is called क्या चीज वासा इफ्रेंस की यही है भाषा वासा डिफरेंशिया दैट लीड्स इनटू vas difference through epididymis. The second point B epididymis. Vasa differentia leaves the testis, छोड़ देता है, निकल जाता है बाहर, and open into highly coiled tubular structure called epididymis. Vasa differentia leaves testis and open in highly coiled structure called epididymis. इसको हम क्या कहेंगे? एपिडाइडिस. Here the sperm is stored for few hours or day. Here sperm is stored for few hours to 1 to 2 days. अब यहाँ पर दिमाग में तुम लोग का क्वेश्चन चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा कि अगर हम लोग इस तरह बात को कैसे पकड़ते हैं, क्लास में बच्चा जो पूछता रहता है ना, वही तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा होगा। ये अगर स्पर्म अगर रहता ही है कुछ घंटों से कुछ देर तक 1 to 2 days, उसके बाद कहाँ चला जाता है? Where after time, that means few hours to days, it break down, split, break down and lyse and engulfed by phagocytic cells, that means WBC macrophage cells that found in our body. समझ में आ गया होगा? यहाँ तक रहता है hours to few days. अब epididymis खुलता किसमें है? C. Vas difference from the caudal region of the epididymis, a white tubule, single white tubule arise called vas difference, and it carries a sperm from epididymis to ejaculatory duct. It is single white duct which arises from कहाँ से? काउडा. काउडा मतलब टेल. काउडा रीजन. ये भी बुक जब बनाओगे ऑब्जेक्टिव तो उसमें वहां पर वो मिलेगा तुमको. कोई कोई बुक में एपिडाइडिमिस का स्ट्रक्चर डाल दिया है, अब पूछ देगा प्रीवियस पहले एग्जाम में पूछेगा नीचे वाला जो रीजन है उसको क्या कहते हैं, कैपुट या कॉर्डा.
कैप कहाँ पहनते हो, पैर में कि सर पर? तो सर पर पहनते हो तो कैप याद रखना, हेड तो ऊपर वाला को कैप पुट, नीचे वाला को काउडा। तो फ्रॉम काउडा रीजन ऑफ epididymis it carries a sperm from epididymis to ejaculatory duct। एक चीज ध्यान रखना कि जैसे ejaculatory duct में स्पर्म पहुंच गया, नेवर इट बैक और स्टे इट रिलीज आउटसाइड। जैसे ही वहां पहुंचा उसके बाद स्पर्म रुकेगा नहीं, उसके बाद वो ejaculatory duct से होते हुए, यूरेथ्रा से होते हुए बाहर हो जाएगा बॉडी का। epididymis to ejaculatory duct। इसी भास डिफरेंस में सेमाइनल वेसाइकल जो एक ग्लैंड है ज्वाइन करता है। तो vast difference, it is a single wide duct which arises from a cauda region of epididymis. It carries a sperm from epididymis to ejaculatory duct. D ejaculatory duct। वैसे पूछेंगे कितना होता है भास डिफरेंस, तो दो बोल देना है, क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों। कितना होता है ejaculatory का? दो, एक लेफ्ट और राइट। ejaculatory duct as the seminal vesicle join to vast difference। जैसे ही सेमाइनल वेसाइकल या डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसाइकल ज्वाइन टू vast difference forming a common duct called ejaculatory duct। As the seminal vesicle join to vast difference to form a common duct is called, लिख देना, ejaculatory duct। यहां तक क्लियर? अब हम चलते हैं थोड़ा सा देखने यूरेथ्रा। The two ejaculatory duct one from the left and other from the right, and urinary duct together forming a common duct.
The two ejaculatory duct and urinary duct open into a common duct which passes centrally to male copulatory organ called urethra. यहाँ तक एसएससी डक्ट की कहानी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसएससी ग्लैंड देखेंगे एंड द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन की बात करेंगे एंड देन वी स्टार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। ये सारी पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू। आपको कोई डाउट हो, दिक्कत हो, जैसा मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ, ये क्वेश्चन आप द करियर अचीवर की वेबसाइट पर डाउनलोड करें, क्वेश्चन को देखेंगे, क्लास में ही इसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, थैंक यू।